was the culture of, in our unit 5, there is the concept culture of colonialism. What was the culture? संस्कृति टा कौन थिला? संस्कृति थिला by coercion. By coercion, the mighty nations exploited the subjugated nations. बलपूर्वक शासन करिवा और सेठू एक्सप्लॉइट करिवा, शोषण करिवा सेमानकर रिसोर्स बलपूर्वक, जा फलरे सेमाने समृद्ध हेले. यूरोपियन नेशंस, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नेशंस प्रॉस्पर कले, आउ कॉलोनियल स्टेट्स जो माने बलपूर्वक अख्तियार है कि शासित हेले सेमानकर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मेरुदंड दोहली विपर्यस्त हेला. सेमाने हेले गरीब राष्ट्र. Two separate classes of states emerged during colonial era. One class was developed nations, another class was poor nations. Developing, there was not any symptom of development, only poor nations. मिनिमम नीड प्रभाव थिला से राष्ट्र जनसाधारण खाद्य नथिला, वस्त्र नथिला, बासगृह, फूड, क्लॉथ, शेल्टर भली मिनिमम फंडामेंटल नीड से राष्ट्र गुड़िकर अभाव थिला. ये थिला कॉलोनियल एरार कल्चर, जोटा कि द्वितीय विश्व युद्ध परे कॉलोनियलिज्म ट्रेडिशनल कॉलोनियलिज्म एंडेड. प्राय सबु राष्ट्र जो गुड़ी को उपनिवेशवाद शिकार, साम्राज्यवाद शिकार ही उपनिवेश होते, कॉलोनियल स्टेट्स होते, से सब इंडिपेंडेंस पाई गले. कारण मिलित जातिसंघर हस्तक्षेप हो बा अन्य राष्ट्र, समृद्धशाली राष्ट्र मानकर बा आंतर्जातिक संस्कृतिर कल्चर, इंटरनेशनल कल्चर मॉडिफिकेशन हो बा गोटे नुआ माइंडसेट रो बा नुआ एटीट्यूड रो डेवलपमेंट हो, ये सब दृष्टि रू कॉलोनियलिज्म एंडेड ड्यूरिंग पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड. एंड द इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नेशंस were very affluent in terms of their economy, and the newly independent nations were very poor, needed the reconstruction of their nation. Reconstruction, another class was very affluent nations. Moreover, I can say here, colonialism did not end. Traditional colonialism ended, but neo-colonialism, modern colonialism emerged. This was the culture. This was the culture of colonial era. In the latter part, in order to reconstruct their nations, राष्ट्र गुड़िकर पुनर्निर्माण पाई गरीब राष्ट्र आवश्यक कले अर्थ आवश्यक कले एवं टेक्नोलॉजी रो रिक्वायरमेंट भी होता. एक रे अर्थ, दुई रे होची टेक्नोलॉजी. बोथ फाइनेंस और टेक्नोलॉजी पाई newly independent nations required. Sir,
सर ओहो सर कौन डिस्ट्रप्शन होते होते नेटवर्क सर आसले सर एबे आसले सर आगे सर आज कहीं जो वेदर बोधे क्लाइमेट वेदर पाई से होउछ सर नेटवर्क प्रॉब्लम सर पिलाମାନେ ତ ସାରା ଭିଜିବଲ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ हेलो सर 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 ओके ओके सर ओके सर हाँ सर ओके सर प्लीज कंटिन्यू सर सर टिके प्लीज ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट देयर वीडियो एंड ऑडियो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट देयर ऑडियो एंड वीडियो अरुण मेहर वीडियो बंद करंतु प्रियंका अंडुअल वीडियो बंद करंतु काई वीडियो देखो पिंकू दास वीडियो बंद करो वीडियो समस्या ऑन कले किसी क्लास डिस्टर्बेंस होउची अरुण मेहर वीडियो बंद करो ना तुमको मीटिंग रो आउट कर देबी पिंकू दास वीडियो बंद करो ज्योति समस्त वीडियो बंद करंतु अरुण मेहर वीडियो बंद करंतु अरुण मेहर प्लीज ऑफ योर वीडियो तले गोटे बटन अच्छी सेटा को ऑफ कर दियंतु तले वीडियो ऑडियो बटन अच्छी तले हैला समस्त वीडियो ऑडियो बंद रहा दरकार ना मीटिंग रे डिस्टर्बेंस होउची आ प्रेजेंट नाम रे के क्लिक करिवेनी जदि प्रेजेंट नाम बार बार क्लिक करिवे तले हमें से मीटिंग रे आपन को बाहर कर दू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डोंट डिस्टर्ब अदर we will continue the class smoothly. That is why keep your video and audio in off mode and only the present now button that will be used by the counselor only, not by others. Okay sir, please continue. Sir, the culture of colonial era thus is noted as homogeneous. Traditional culture of colonial era was perhaps known as homogeneous culture. In the post-colonial era, culture is heterogeneous. Heterogeneous means the nations which were rich had not common intention, had not common attitude, where diversity in their national requirement and diversity of their attitude in the international politics, so that post-colonial era culture was heterogeneous. After that, we shall enter into Unit 6, feminist approach. Feminist approach advocates the role of women in international politics. The women sector should not be ignored. It advocates the women participation in international politics, international affairs, international activities more and more. It opposes patriarchy. अर्थात पुरुष प्रधान समाज को, पुरुष प्रधान परिचालना को आंतर्जातिक स्तर रे फेमिनिस्ट अप्रोच विरोध करे, अपोज करे.
ଏବଂ advocate करे ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଏ in favor of women, more and more participation of women class in international politics. You know, international politics is today known as the struggle for power. A mighty nation always wants more and more power, more and more position, more and more influence throughout the world is known as the assertion of a mighty nation. So that feminist approach also opposes unequal equation of international order. International order should be egalitarian, equal always. There should be balance of position, balance of power, balance of influence, and balance of cooperation. There should not be any discrimination among nations in terms of power, position, military strength, and the assistance also. You know, there is World Bank, there is IMF, International Monetary Fund, which financial institutions always stands for to assist those poor nations for their speedy development. In financial assistance, there should not be any discrimination. The feminist approach is very important. Is also is very utility. It has a very utility in understanding the international politics and international relations. International politics and international relations, those terms, though known as interchangeable, but they have fundamental difference. International politics means day-to-day affairs, day-to-day affairs and day-to-day attitude of each and every nation in international activities. International relation means the relation among nations, relation among nations with different attitude, different elements. I had already explained you, but international politics is the day-to-day affair in which the feminist approach requires. Feminist approach advocates more and more participation of women in international activities. It has the feminist approach has social value. It never be, this approach can never be ignored, because the women class is by far the largest, though not largest, but equal in terms of women, their counterpart, male part, but due to their size of population, both women and men should have equal role played in the international arena, international politics, that too feminist approach advocates. It is important. Next is sustainable development in the context of environmental approach. Environmental approach is the seventh approach. We had completed 6 approaches to the study of international relations. Seventh one is environmental approach. Environmental approach, you know what is environment. Environment is the flora, sum total of flora, fauna. We have in our earth, flora of fauna, both combined together forms our environment. Human being, the nations, each and every person has a burden, has a responsibility to maintain, to safeguard, to protect the environment. The environment approach advocates, environment approach always focuses the protection of
environment should be the primary aspect of a nation's development. Development तो हबो, development सहित आमर जो परिवेश अच्छी, जो जंगल संपद अच्छी, जो जल संपद अच्छी, जो प्राणी संपद अच्छी, आमर जो वायु संपद अच्छी, वायुमंडल अच्छी, ये सब गुड़िक निहाती प्रोटेक्शन रा आवश्यकता अच्छी। कारण विकास पाई आमे केबे हेले आमर परिवेश को क्षति पहुंचाइबा उचित नुहे। विकास पाई आमे सबु गुड़िक संपद को आमे केबे हेले निम्नगामी होबा को दबा नहीं। या होची एनवायरनमेंट अप्रोच रो प्राइमरी एम। एनवायरनमेंट अप्रोच रो ओनली जिस्ट पॉइंट होची जे विकास हो, रिस्ट्रक्चर हो, पुनर्निर्माण हो राष्ट्र गुड़िकर, किंतु सबु बड़े प्राइमरी फोकस दिया जाऊ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। गछ व्यापक भाव में काटिबा नहीं, फॉरेस्टेशन करिबा, जंगल संपद ये सबुर सुरक्षा सहित विकास हो। या द्वारा आंतर्जातिक व्यवस्था, आमर पृथ्वी, आमर मानव समाज, आमर प्राणी संपद सबु गुड़िक सुस्थ भाव रहिबो, जोटा कि एनवायरमेंटल अप्रोच एडवोकेट करे। यू नो देयर आर डिफरेंट समिट्स, OECD summit, Rio summit. There are number of summits. Summit means the meeting of highest level delegates of a state with other highest level delegates of other states is known as summit. दुई बा ततोधिक राष्ट्र गुड़िकर शीर्ष स्तरीय नेता मानकर जो सम्मिलन हुए ताकू समिट बोली कहा जाए। वेरी इंपोर्टेंट इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी। अंतर्जातिक या होची सबुठारु गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समिट को तुम्हें मन रखियो। समिट मीन्स द मीटिंग ऑफ two or more states with their highest level delegated leaders। अर्थात जदि अमेरिका राष्ट्रपति चाइना राष्ट्रपति मध्य कौन सी गोटे स्थान रे आलोचना हुए ताकू समिट बोली कहा जाए। समिट रो आक्षरिक अर्थ होची शिखर सम्मेलन, शीर्ष स्तरीय आलोचना, शीर्ष स्तरीय मत विनिमय, समिट बोल कहा जाए। SUMMIT समिट। रियो समिट तुम जानिच एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पाई समग्र पृथ्वी रे नेता मानकर भितरे जो उद्वेग रही से उद्वेग को दृष्टि रे रखी विभिन्न समय रे विभिन्न स्थान रे आलोचना मान हेई चली किभली केउ उपाय रे आमे आमर विश्व को निरापद रखिबा, आमर परिवेश को निरापद रखिबा। सेति पाई विभिन्न समय रे विभिन्न स्टेज रे ए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इम्प्लीमेंट सब आमे व्यवहार करते तार जो पॉइजनस गैस एमिशन होची, इंडस्ट्रियल पॉइजनस एमिशन होची ताको किभली कम करा जो जोटा कि आमर एटमॉस्फेयर को व्यापक क्षति पहुंचुची, आमर परिवेश को जहाँ क्षति पहुंची ताको आम किभली कम करबा, केते दूर कम करबा, केउ राष्ट्र अधिक होची एमिशन, ए सब गुडी को आलोचना होची। तार मेन एम is to protect our environment. This is called environmental approach. This approach never opposes economic growth. This approach never opposes developmental attitude, developmental process. It supports developmental procedure with the protection of environment. This is Unit 7. Next. World views from Asia, Africa, and Latin America. World views from Unit 8. World views from Asia, Africa, and Latin America. Latin America, you know,
Asia is a big continent. Africa is also a big continent with number of states. Both Asia and Africa are known as four nations continent. In Asia, preferably four to five nations are developed. Other nations are underdeveloped or poor nations. In Africa, almost all nations are underdeveloped or poor nations. World focuses on Asia and African nations to come to the limelight, come to the mainstream of development with the assistance of international different economic forums. Particularly, UNO has a number of programs, number of various projects for their development in terms of food and agriculture, in terms of their protection of culture, in terms of their infrastructure development, in terms of their technological advancement. These are the focuses of entire world towards Asian nations and African nations, also Latin American nations, because entire world's 3/4 population reside in Asia, Africa, and Latin American nations. These nations form together as the world today. But due to the lack of their low development, due to their poverty-stricken people, Asia and Africa are still runs behind European nations. You know, European nations are much more developed. These nations in Europe are developed nations in terms of, in comparison to Asia and African nations and Latin American nations. So the view of the entire world is to bring into the mainstream of the world development process with the help of different economic forums like World Bank, like International Monetary Fund, and with the personal assistance of mighty nations like America, England, France, German, Japan. These Asian and African and Latin American nations should come to the mainstream. Next unit is Unit 9, End of Cold War. End of Cold War, you know, we had already discussed in the post Second World War, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরে entire world was divided into two power blocks. After Second World War, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি পরে সমগ্র বিশ্ব দুই ভাগে দুইটা কনফ্রন্টেড পাওয়ার ব্লকস, দুইটা মিলিটারি পাওয়ার ব্লকস, অর্থাৎ দুই কেন্দ্রিক, যাহা কুয়া যায় bipolar system. The concept is bipolar system. Bipolar system means two power blocks with their confrontation, with their enmity, with their race to overcome each other. দুইটা ক্ষমতা কেন্দ্র পরস্পর সহ লড়াই করিবার মানসিকতা থিবা দৃষ্টিରୁ তাକୁ দুইটা পাওয়ার ব্লক বলি কুହାଯାଏ। যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরে সমগ্র বিশ্ব দুইটা পাওয়ার ব্লক রে ডিভাইড ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସମୟର କୋଉ ସମୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ବାଇପୋଲାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର led by USA, United States of America, in the name of
North Atlantic Treaty Organization by NATO. Another power bloc was led by erstwhile USSR, Union of Soviet Socialist Republics. 15 republics mixed together formed the Soviet Union. Now, it is Soviet erstwhile USSR has been disintegrated and divided into number of republics. At that time, all the republics formed together as known as USSR. Both USSR was the leader of Warsaw Pact, a very aggressive military group, a very aggressive military group, a very aggressive military power bloc. Both Warsaw and NATO मेंटभुक्त राष्ट्र समूह अमेरिका नेतृत्व रे परिचालित नाटो मेंटभुक्त राष्ट्र समूह द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती समय सोवियत रूसिया नेतृत्व रे वार्सो पैक्ट नामक एक सामरिक मेंटभुक्त राष्ट्र समूह परस्पर को अतिक्रम करिवार परस्पर को सम्मिश्र करिवार मानसिकता नै लड़ाई लिप्त रही जहाँ कहुला कोल्ड वार. War is always warm. This war is termed as cold. It is cold as because no single bullet was fired, but there was war-like situation in the entire world. समग्र विश्व रे युद्ध परिवेश सृष्टि होता एवं प्रत्येक राष्ट्र नुहे केवल प्रत्येक व्यक्ति तृतीय विश्वयुद्ध लागिवार सदा सर्वदा भय निज मन में पोषण करते. द्वितीय विश्वयुद्ध जो विभीषिका सद्य समाप्त खूब निकट समाप्त होता से समय द्वितीय विश्वयुद्ध जो विभीषिका को समस्त अनुभव करते तृतीय विश्वयुद्ध परिस्थिति परिणति कौन हम ता चिंता करी प्राय उणाधिक समस्त व्यक्ति समस्त राष्ट्र निश्चित भाव में भय जर्जरित होते एक युद्ध परिवेश सृष्टि होता. एंड यू नो बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर were atomic nuclear powers. They had individually the capacity to destroy entire world several times. प्रत्येक राष्ट्र सोवियत रूस को बा अमेरिका को उभय राष्ट्र निकट में क्षमता थिला पृथ्वी को शह शह बार एकाकी ध्वंस करने. तेणु तृतीय विश्वयुद्ध परिणति भयावह को अनुभव करी समस्त विश्ववासी युद्ध जनित परिवेश रे काल अतिपात करिवार अवस्था को कोल्ड वार बोली कहा जाए. कोल्ड वार is a concept linked with bipolar system. Military strength both are equal, America and Russia. Economic strength more or less both are equal. Technologically both are equal, and they had heterogeneous ideology, political ideology. American political ideology was democratic liberalism. Russia's political ideology was communism, साम्यवाद. गणतांत्रिक उदारवाद अमेरिका, साम्यवाद रूसिया. उभय रूसिया एंड अमेरिका निजर राजनैतिक आदर्श विस्तार करने को चाहिए. केते राष्ट्र को साम्यवादी राष्ट्र रूप परिणत करेंगे रूसियार लक्ष्य रहा, अमेरिकार लक्ष्य रहा गणतांत्रिक उदारवाद रूपक राजनैतिक आदर्श को विस्तार करने. उभय परस्पर विद्वेष युद्ध प्रस्तुति और मेंटभुक्त करवा सामरिक मेंटभुक्त करवा मेंट को परस्पर विरुद्ध रे
लड़ेला भली परिवेश सृष्टि कले जहाँ कहगला कोल्ड वार सिचुएशन एंड द कोल्ड वार did not last long. The Cold War situation did not last long. कारण युद्ध ପାଇଁ दुईटा समकक्ष समशक्तिशाली पक्ष दरकार उभय अमेरिका और रूसिया दुई समशक्तिशाली राष्ट्र थिले सेथिପାଇଁ उभय भितरे द्वंद्व आउ विद्वेष होइଥିଲା in the year 1991 USSR was disintegrated. The president of USSR, Soviet Russia President Mikhail Gorbachev, in the year 1991 implemented two ideologies, two policies, perestroika and glasnost in their language. You know, communism ideology believes with heavy limitations, strong limitations. But Mikhail Gorbachev made Soviet society a free society. As a result of implementation of perestroika and glasnost, Soviet Russia, Union of Soviet Socialist Republics disintegrated. खंड खंड हो गला 15टी जाक प्रजातंत्र सबु स्वाधीन हो गले रूसिया जेतेबेले खंड विखंडित हैला डिसइंटीग्रेटेड हैला गोटे पक्ष जेतेबेले रेस रु पळै गला शीतल युद्ध परिसमाप्ति हैला इन द ईयर 1991 during Cold War period, the entire world was not divided into two camps, was divided into three camps. Under the leaders of America, the NATO pact military camp was regarded as first world. अमेरिका नेतृत्व रे परिचालित नाटो मेंटभुक्त राष्ट्र समूह को शीतल युद्ध समय प्रथम विश्व बोली कहउतला फर्स्ट वार रूसिया नेतृत्व रे परिचालित वार्सो पैक्ट भुक्त राष्ट्र समूह को द्वितीय विश्व बोली कहउतला सेकंड वॉर एंड दोज नेशंस हु नेवर जॉइन्ड never aligned with NATO, neither with NATO nor with Warsaw, known as together third world. प्रथम विश्व द्वितीय विश्व तृतीय विश्व गोटे समय शीतल युद्ध समय कॉन्सेप्ट मन रख प्रथम विश्व द्वितीय विश्व तृतीय विश्व प्रथम विश्व किए अमेरिका नेतृत्व रे परिचालित नाटो मेंटो भुक्त राष्ट्र समूह रूसिया नेतृत्व रे परिचालित वार्सो मेंटो भुक्त राष्ट्र समूह होचंती द्वितीय विश्व एवं एई दुईटा मेंटो सामरिक मेंटो सह संयुक्त हेई नथिबा बा समदूरत्व रक्षा करिथिबा एई दुईटी मेंटो सह अन्य राष्ट्र समूह को कहगला तृतीय विश्व आ तृतीय विश्वर अन्य नाम भी अच्छी अदरवाइज नोन एज नॉन अलाइंड नेशंस अलाइंड मीन्स संयुक्त हवा नॉन अलाइंड मीन्स उभय नाटो आ वार्सो मेंटो सह संयुक्त न हवा कहा जाए नॉन अलाइंड एवं तृतीय विश्वर राष्ट्र समूह गोटे आंतर्जातिक आंदोलन गढ़ी तोड़ी इंटरनेशनल मूवमेंट नोन एज नॉन अलाइंड मूवमेंट बा नाम बोली कहा जाए नॉन अलाइंड मूवमेंट
उभय गोष्ठी ठारू सम दूरत्व रक्षा करिबा, equal distance from both the military camps, and to resolve their disputes with through dialogue. Through dialogue was the aim of now. Three leaders of the world at that time: Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India; Marshal Tito, the President of Yugoslavia; General Suharto, the President of Indonesia. Three world leaders formed non-aligned movement, गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन, ଯାହାକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ सोभियत ରୁଷିଆର ପତନ ପରେ, सोभियत ରୁଷିଆ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ପରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା। ଲଢେଇରୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଅପସରି ଗଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲଢେଇର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନଥାଏ। ତାହା ଘଟିଥିଲା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ନଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବି ଗଲା, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଏ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 9। ୟୁନିଟ୍ 10 ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଇସ୍ୟୁଜ, ନେସନ ଷ୍ଟେଟ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପିସ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ, restructuring of UN. Unit 10 post cold war issues. द्वितीय विश्व युद्ध पर जो शीतल युद्ध विश्व अनुभव करथिला, शीतल युद्ध परिवेश सृष्टि हेगला 1900 शीतल युद्ध र परिसमाप्ति घटिथिला 1991 मसिया रे। शीतल युद्धर परिसमाप्ति सह विश्व एबे नुआ व्यवस्था आड़ को गति करथिला, जहा कुआ पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड। ड्यूरिंग पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड period, the states craved for their speedy development. युद्ध मानसिकता सरीगला, एबे विकास मानसिकता almost all वर्ल्ड लीडर्स को, वर्ल्ड नेशंस को चिंता करे जे द्रुत गति रे हमर विकास आवश्यक। विकास पाई यू नो फॉर स्पीडी डेवलपमेंट there is the need of huge foreign assistance. Foreign assistance जहाँ को आ जाए capital assistance is the first measure. Hello, Arun Meher, stop video. Hello. During post Cold War period, both the developing and developed nations wanted speedy development and speedy assistance. At that time, the developed nations had much capital, unutilized capital with their effort. राजकोषर सेमानकर विपुल परिमाण रे अणव्यवहृत पुंजी गच्छित होता। Also, they had ultra modern technology with them. The developing nations wanted more and more capital assistance from developed nations for restructuring their nation for speedy development with the help of also the ultra modern technology. The entire world also moved
towards speedy development. That was the post-Cold War issue. Post-Cold War issue was speedy development because there was the concept of nation state. You know, today states are not termed as only state. ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଉନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି. Each state has already been converted into a nation. As there is an upsurge of nationalism, rise of aggressive nationalism. Each state is today known as nation state. Both the nation and the state, these two concepts are mixed together, is known as one concept. State is a nation, nation is a state. Where there is a nation, there is a state. Where there is a state, there is a nation. That is called the upsurge in nationalism. The upsurge in nationalism made each state into a nation state. So the nation states wanted more and more speedy development to be equal with the other developed nations in terms of their infrastructure rebuilding, in terms of their industrialization, in terms of their various world-class amenities available to their citizens. At that time, the period of globalization also started. 1 minute. The nation states wanted more and more development so that they needed more and more assistance, and the period of globalization started. Globalization, you know, is a more economic concept. Economically, entire world is converted into a village. Entire world has already been turned into a one economic system. समग्र विश्व गोटिए आर्थिक व्यवस्थारे अनुबंधित होबाकू जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. मिलित जाति संघर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO is managing entire affairs of globalization. Globalization wants that the states should not limit their economy within their territorial boundary. They should free it towards entire world. Entire world is one economic system. State is a part and parcel of one economic system, one world economic system. So that the state should open their economy for competition, free competition, open system, privatization. These are the elements of globalization. There should not be government control of economy, trade, import and export system. Import and export system should not be the government control activities.
The industries should be, the industrial houses should be, the AMNC, multinational corporations should be permitted to establish their industry anywhere in the world they want. They can sell their goods, sell their outputs, export their outputs without any government restriction, so that there should be free competition among nations, competition among industries, and competition among industrial entrepreneurs, so that developmental process will be more and more speedy. This was the post Cold War issue. Another concept was security concern. Security means national security of a nation individually and collectively. You know, in order to protect the sovereignty of a nation, there should be military strength, adequate military strength with ultra modern arms and ammunitions, weapons in their arsenals. Every state has not sufficient infrastructure to produce arms, ammunition, and weapons. They need assistance from superior powers in order to protect their national territory, their international boundaries. So that security concern was another concept of post-Cold War world. Peace and development initiatives, UN became active during the post-Cold War era. UN Security Council became more assertive where there were any dispute among the nations, bilaterally or multilaterally. The UN Security Council, the second highest body of United Nations organization, the Security Council immediately interferes. If there is any need, the UN can deploy its own army to refrain from any military aggression among nations. ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପୁରା ଦମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱରେ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ବିକାଶ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ସେଠି ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ଅଛି ସେଠି ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ବିକାଶକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏହାର 5ଟି ଯାକ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ, ଅନ୍ୟ 10ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ, UN Security Council has 15 members. Out of 15 members, 5 members are permanent members, sthayi sadasya. These permanent members are known as 5 superpowers. Pancha Mahashakti, 5 superpowers. These are United States of America, Soviet Russia, third one is England, fourth one is France, and fifth one is from Asia, the People's Republic of China. These 5 are permanent member
of UN Security Council. Other 10 members are elected only for 2 years to the Security Council by General Assembly, the highest level organization of UNO, highest level body of UNO. मिलित जाति संघर सर्वोच्च संस्थार नाम होची the General Assembly, साधारण परिषद. द्वितीय सर्वोच्च संस्थार नाम होची Security Council, निरापत्ता परिषद. Literally means it has the responsibility. The Security Council has the responsibility to make the world war free. युद्ध भय को दूर करिवार समस्त दायित्व निरापत्ता परिषद. विश्वर निरापत्ता पाई विश्वर निरापत्ता परिषदर दायित्व. तेणु मिलित जाति संघर जो 5टी स्थायी सदस्य रहिले, 5 परमानेंट मेंबर्स रहिले, they have a special status. They have conferred veto power. Veto means power to prohibit, power to suspend. Suspend any decision taken in a meeting by the Security Council may be diffused by the veto power of each and every permanent member of Security Council. प्रत्येक स्थायी सदस्य राष्ट्रर निरापत्ता परिषद रे थिबा प्रत्येक स्थायी सदस्य राष्ट्रर निषेधादेश करिवार क्षमता, स्वतंत्र क्षमता अछि, स्पेशल पावर अछि. निरापत्ता परिषद रे जो निष्पत्ति निया जाए, रिजोल्यूशन करा जाए, से निष्पत्ति जदि कोनोसी बृहत शक्ति मानक स्वार्थ विरोधी हेई था ताहले से माने से निष्पत्ति को अकामी करि दबार जो स्वतंत्र क्षमता पाई चंती ताहाकु कुआ जाय वीटो पावर, निषेध करिवार क्षमता. काहाकु निषेध? निरापत्ता परिषदर निष्पत्ति को निषेध करा. निषेध अर्थ होची अकामी, powerless, worthless, fruitless, अनूर्ति आउ कार्यकारी होबनी. That special power is known as veto power. When and where they utilize it? Where and when a superpower feels that the decision of Security Council hampers its own national interest. You know, the foreign policy, the first foremost ingredient of a nation's foreign policy is its own national interest. जातीय स्वार्थ को सुरक्षा दबा प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्रर वैदेशिक नीतिर मूलदुआ, फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर. जेउठी गोटे बृहत शक्तिर जातीय स्वार्थ बाधा पड़े सेतेबेले से निषेध करे. तेणु मिलित जाति संघ जदियो क्रियाशील होइथिला, विशेष करी शीतल युद्ध परवर्ती विश्व रे बृहत शक्ति मानकर स्वार्थ को सुरक्षा दवा पाई मिलित जाति संघ विशेष भाव में कार्य करथिला. गरीब विकासशील राष्ट्र मानकर स्वार्थ को प्राधान्य देई नथि, जाफरे आजिर विश्व भी प्रेजेंट डे वर्ल्ड टुडे also witnessing two class of states. One is developed
another is developing states. समग्र विश्वर राष्ट्र गुड़िक दुई भाग रे विभक्त होईची आर्थिक दृष्टिकोण इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. डेवलप्ड, डेवलपिंग. There is no equilibrium of economic, military and cultural strength among all nations of the world in order to form a better world order. एक सुंदर विश्व व्यवस्था गढ़ी तोलिया पाई राष्ट्र भितर थिबा पार्थक्य गुडी को आदौ विफल कर दिया जाऊ ना, जा फल एबे भी राष्ट्र समूह विभक्ति मिलित जातिसंघर कार्यकारिता द्वितीय शीतल विश्वयुद्ध परवर्ती अवस्था यूनिट 11 एमर्जिंग पावर्स ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका. You know, traditionally the world was managed by 5 superpowers. Traditionally, world was managed by 5 superpowers. 3 from Europe, 1 from South America, 1 from Asia. England, France, America, United States of America. These 3 are major superpowers. Also Russia, another major supreme superpower. And 1 from Asia on the regional basis, latter added as the प्रथमे सेटा चाइना को निया जाई नथिला. भारतर उद्यम क्रमे चाइना को आंचलिक भित्ति रे जेहेतु एशिया थिला एक बृहत महादेश, एशिया रु कोनोसी राष्ट्र मिलित जातिसंघर निरापत्ता परिषद रे स्थान पाई पारु नथिले. भारतर उद्यम फल रे चाइना को जदियो से समय रे से बृहत शक्ति हेई नथिला, केवल रीजनल बेसिस रे आंचलिक दृष्टिकोण आंचलिक प्रतिनिधित्वर आवश्यकता कारण चाइना को मिलित जातिसंघर निरापत्ता परिषद रे स्थायी सभ्य राष्ट्र मान्यता दि जाए. Later on, China emerged as a superpower which is now at par with America in terms of its military strength, in terms of its technological strength, in terms of its cultural strength, in terms of its military strength. Military, economic, cultural, technological strength दृष्टि अमेरिका चाइना समान स्थिति रे थिबा कथा एबे समग्र विश्व अनुभव को. तेणु से समय रे 1945 मसिया अक्टोबर 24 तारीख रे जेतेबेले यूनाइटेड नेशंस जन्म नेथिला, मिलित जातिसंघ प्रथमे जन्म नेथिला 1945 मसिया अक्टोबर 24 तारीख रे. से समय जो सुपर पावर एमर्जिंग पावर सब थिले सुपर पावर ता परवर्ती विश्व रे एबे नुआ करी बहु राष्ट्र प्रतिद्वंदिता क्षमता बलयर प्रतिद्वंदिता भितर को आसी सारी चंती. सेथि मध्यरु ऑस्ट्रेलिया अन्यतम. गोटी राष्ट्र को बृहत शक्ति बा शक्तिशाली राष्ट्र बोली कहा जाए. सेतिकी बेले जेते बेले तार राजनैतिक स्थायित्व
political stability, cultural superiority, developmental upgradation, military capability, and above all, the economic strength forms together a nation's strength. ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି ତାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣ ଯେତେ କୁଶଳୀ କର୍ମପ୍ରବଣ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରୁଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଗଲେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଭା ହେଇଛି। ନୂଆ କରି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମହାଶକ୍ତି ଥିଲେ, 5 ସୁପର ପାୱାର୍ସ, in addition to 5 superpowers, newly emerged superpower is Australia. India in Asia. In Asia, India also is now coming as a superpower. Its political stability, military strength, economic development, standard of living of its citizens, and the technological achievement India has made is being measured as a superpower in international politics. Where there is a conflict in the entire world, the presence or absence of India is felt. India's influence is now felt throughout the world, be it Iran-USA conflict, be it South Korea-North Korea conflict, be it any conflict in Africa. India's role in UNA, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ଭୂମିକା, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭାରତର ସହାୟତା. So also regional cooperation, India's role in regional cooperation. Regional means India's assistance, cooperation to its neighbors made India a superpower, a believable, a dependable cultural nation India, जहाँ पर विश्वास करा जाय परिबो, भरोसा करा जाय परिबो एवं जहार क्षमता मध्य अनुभूत हो परिबो से भली राष्ट्र को गोटे शक्तिशाली राष्ट्र को से दृष्टि आज विश्व रे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सहित अन्यतम शक्तिशाली राष्ट्र भाव में गणा जा एमर्जिंग नुआ करी सृष्टि होउथुवा शक्तिशाली राष्ट्र इन एडिशन टू दोज 5 सुपर पावर्स like a neighboring state of United States of America, Canada is now a superpower, is regarded as a superpower. Its strength has increased considerably. Its role played in international politics is felt at every point of time, so that Canada is a new and emerged superpower in the world. So also Japan, which was
annihilated by USA in the Second World War. द्वितीय विश्वयुद्ध समय बा समग्र पृथ्वी जदि कौनसी ना कौनसी स्थान रे आणविक बोमार व्यवहार होता से राष्ट्र होची जापान। जापान उपरे आणविक बोमा अमेरिका निक्षेप दुई थर करबा फलरे द्वितीय विश्वयुद्ध परिसमाप्ति हेतिला। जापान ध्वस्त विध्वस्त हेतिला। After Second World War, entirely destroyed Japan restructured its nation. राष्ट्र को खूब शीघ्र पुनर्निर्माण करदेले जापानवासी। समग्र विश्व रे जापान एक अति शक्तिशाली राष्ट्र भावरे एबे परिगणित। There was the day when Japan defeated a large state, the People's Republic of China. दिन थिला इतिहास हुए जापान चाइना को भी पराजित करथिला युद्ध। से जापान has recovered itself from the devastating consequence of Second World War. Now, Japan is an emerged superpower in Asia and in the world also. Australia, Canada, India, Japan, like Brazil, these are now newly superpowers in addition to those five. Traditionally, those five superpowers. Why this is discussed? Because these superpowers should have the permanent member status in Security Council, the second highest body of United Nations. There is the demand for the long period throughout the world to include, to accord special member status to India, special member status to Australia, to Canada, to Japan, to Brazil, because also to Germany, because these states has a say in entire world politics. समग्र विश्व राजनीति रे सेमानकर एक स्वतंत्र स्थान थिबारु, स्वतंत्र प्रभाव थिबारु, स्वतंत्र कार्यकारिता थिबारु ये सब राष्ट्र गुडी निश्चित भाव में मिलित जाति संघर निरापत्ता परिषद रे स्वतंत्र क्षमता बा भेटो क्षमता सह स्थायी सदस्य तार पद और मान्यता दिया जिबा आवश्यक बोली दाबी है। So that these states are being discussed as emerging superpowers. नुआ करी सृष्टि होतबा स्वतंत्र क्षमतार अधिकार थिबा राष्ट्र सब। Another last unit is regional groupings. Economic and security. Regional grouping means a group of states with a common intention formed an organization with a particular aim and objective is known as regional grouping. In international politics, a single state may not have much more influence. A number of states formed a group and continue to exercise their influence in international politics successfully is known as international grouping or regional groupings. गोटे राष्ट्र एकाकी विश्व राजनीति रे जेते प्रभाव विस्तार करि न पारिबो
एकाधिक राष्ट्र एकाठी गोष्ठी गठन करी विश्व राजनीति को प्रभावित करिवारे सेते सफल होई परिबे सेही उद्देश्य रे विभिन्न दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण देयर इज रीजनल ग्रुपिंग मिलिटरी दृष्टिकोण देयर इज रीजनल ग्रुपिंग कल्चरल दृष्टिकोण देयर इज रीजनल ग्रुपिंग कोऑपरेशन दृष्टिकोण देयर इज रीजनल ग्रुपिंग and entire world now has a number of regional groupings so that regional groupings are very much important in world politics today. Economic regional groupings, there are examples: group 7, group 20. These are the regional groupings. G7 सातोटी राष्ट्र means अति शिल्प समृद्ध आर्थिक शक्ति थिबा सातोटी राष्ट्र को नहीं जो गोष्ठी अंतर्जातिक गोष्ठी गठन करा जायछि ताकू ग्रुप 7 बोली कहा जाउछि G7 ग्रुप 7 सातोटी शिल्पोन्नत राष्ट्र निजर परस्पर स्वार्थ को कॉमन स्वार्थ को अधिक सुरक्षित करी रखिया पाई से माने ग्रुप करछन another example you may say EU European Union a number of states in Europe have formed a regional grouping namely European Union. European Union has only one objective, that is the economic objective. Common currency. These states who are part of, who are members of European Union have not their personal individual currency. They have one common currency. You know, euro. Euro is the common currency of European Union. समस्त राष्ट्र जिते सदस्य अछंती यूरोपियन यूनियन रो सबु सदस्य राष्ट्रंकर निजस्व करेंसी निजस्व आर्थिक व्यवस्था को सेमाने गोटिए व्यवस्था रे परिणत करचंती समस्तंकर मिलित करेंसी सेमाने प्रचलन करचंती जहार नाम होची यूरो बोली यूरो माध्यम रे यूरोपियन यूनियन रो समस्त सदस्य राष्ट्र गुड़िक निजर आर्थिक क्षमता को सुरक्षित आर्थिक स्वार्थ को सुरक्षित कर रखिया सहित परस्पर सहयोग मध्य लाइकवाइज ग्रुप 20 सेमानंकर भी ग्रुप 20 रो भी लक्ष्य एका आर्थिक स्वार्थ को परस्पर सहयोग भित्तिरे से राष्ट्र माने सुरक्षित कर रखिया पाई जो गोष्ठी गठन करचंती रीजनल ग्रुपिंग करचंती आर्थिक दृष्टिकोण इकोनॉमिक दृष्टिकोण सेटा कहा जाउची ग्रुप 20 बोली ए बळी बहुत ग्रुप अछि इकोनॉमिक दृष्टिकोण सिक्योरिटी दृष्टिकोण सिक्योरिटी अर्थात निरापत्ता बल्कि जानिच निरापत्ता होची निजर सार्वभौमत्वर सुरक्षा निजर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रो सेफगार्ड पाई प्रोटेक्शन पाई जो व्यवस्था अछि ताको कहा जाय नेशनल सिक्योरिटी बोली यदि गोटिए राष्ट्र निजर राष्ट्रीय सार्वभौमत्व को सुरक्षित कर रखिया पाई समर्थ न हुए एकाधिक राष्ट्र परस्पर को सहयोग भित्तिरे परस्पर सॉवरेंटी बा सार्वभौमत्व को सुरक्षा दवा पाई जो सहयोग करबा उद्देश्य रे जो गोष्ठी गठन करा जायथे ताकू रीजनल ग्रुपिंग को जाय तार मेन ऑब्जेक्टिव होची मिलिटरी प्रोटेक्शन बा सिक्योरिटी एंगल सिक्योरिटी मिलिटरी स्ट्रेंथ दृष्टि सॉवरेंटी रो प्रोटेक्शन दृष्टि से ग्रुपिंग को कहा जाउची सिक्योरिटी ग्रुपिंग सिक्योरिटी रीजनल ग्रुपिंग इकोनॉमिक रीजनल ग्रुपिंग
सिक्यूरिटी रीजनल ग्रुपिंग इकोनॉमिक अर्थ आर्थिक स्वार्थ को सुरक्षा पाई जे रीजनल ग्रुपिंग सृष्टि कराई थाए ताकू रीजनल ग्रुपिंग आर्थिक बोली कहा जाए एवं सामरिक दृष्टि सामरिक सुरक्षा दृष्टि जो रीजनल ग्रुपिंग सृष्टि होता है ताकू रीजनल ग्रुपिंग सामरिक बोली कहा जाए निरापत्ता बोली कहा जाए ये बहु मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन सब अच्छी प्रीवियसली आम डिस्कशन करथिले नाटो वार्सो ये बहुत गुड़िए ऑर्गेनाइजेशन अच्छी आज दिन भी से नाटो अच्छी वार्सो भी अच्छी से मानकर कार्य होउची से मेंटभुक्त समस्त राष्ट्र गुड़िकर राष्ट्रीय सार्वभौमत्व को सुरक्षा करवा परस्पर सहयोग भित्तिरे परस्पर प्रति सक्रिय योगदान भित्तिरे जदि गोटी राष्ट्र उपरे आक्रमण हुए ताहले से गोष्ठीभुक्त समस्त राष्ट्र उपरे आक्रमण हैला बोली धरी निया जाए परस्पर को सहयोग करी परस्पर सार्वभौमत्व को एकता एवं अखंडता को यूनिटी और इंटीग्रिटी को से माने सुरक्षा देवारे कार्य करथांती ता कहा जाए रीजनल ग्रुपिंग ग्रुप अर्थ होची ए नंबर ऑफ स्टेट्स formed a group a number of states formed a group is known as regional grouping where there is security is the objective that is called regional objective regional grouping security where there is economic objective is involved that is called regional grouping economic both these groups are important in world politics today in maintaining international relations. We have covered 11 units. The rest 5 units will be 12 units. We have covered 12 units. Rest 5 units will be covered in the next class. Now we shall see the doubt clear class. Doubt clear class. Those who have any doubt may ask. Hello. Hello. Sir, Kalpana is here. हाँ. Sir, आपण जे भी recent पढ़ेले इकोनॉमिक रीजनल ग्रुप 7 आछी तो एग्जांपल रे आपण कहले ईयू जोडा कि यूरोपियन यूनियन आछी देन आपण पढ़ेले group 7 is not European. Group 7 another regional grouping. European Union another examples. Group 20 another economic grouping. These are the economic groupings. Separate economic groupings, not one. Okay. तो सर यू जो कहले यूरोपियन यूनियन से ग्रुप 20 रे आछे ना ग्रुप 7 रे आछे ना ग्रुप 20 is another regional grouping economic point of view. Group 7 economic grouping ro another example. European Union another example of regional grouping. Its location exclusively in Europe, not anywhere in the world. तो सर नेक्स्ट इज These are three separate examples. These are three separate examples. Okay. Then sir security regional grouping जो आपण कहले NATO, Warsaw, North ग्रुप 20 Atlantic. भितरे सर एगुडा आछे ना No. Group 20 exclusively economic regional grouping. NATO is security point of view regional grouping. Okay. तो सर सिक्योरिटी रीजनल ग्रुपिंग रो किसी एग्जांपल कहबे कि NATO, North Atlantic Treaty Organization, Warsaw Pact, these are regional groupings. Group means a number of states joined together with a common objective and formed a group. Objective is economic, objective is security. Okay, sir. Safeguard of their national unity and integrity and their sovereignty. That is means security. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.
Any other? Any other, please? हेलो सर। सर जो फास्ट आपण कहले यूएनसीटी जो 5 जण पूर्वरु रही आछंती सिक्योरिटी काउंसिल रे मेंबर परमानेंट सीट रे मेंबर। अछि। हां परमानेंट मेंबर जो रही आछंती तो एबे चाइना को देखिले से एबे माने आउ सेमती डेमोक्रेटिक बा रिपब्लिक हे कि नाही से उडे माने डिक्टेटरशिप अंडर अछि तो ता काढी हबो कि हमरो काढिबा कथाटा सेपरेट जिनिस, काढिबा कथाटा सेपरेट जिनिस, काढिबा पई जणकू मेंबरशिप रु ताकू आउट करिया पई हेले सेटा सेटा से डिसीजन ता केवल सही परिस्थिति रे नै जाय परियो जदी इंटरनेशनल जो कल्चर अच्छी, इंटरनेशनल लॉ अच्छी, इंटरनेशनल जो ऑर्डर अच्छी ताकू जदी से सीरियसली डेविएट करुथवार कोनोसी प्रूफ मिले, एविडेंस मिले एवं ताकू जदी समग्र विश्व अनुभव करे, विशेष करे जनरल असेंबली द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशंस जदी को अनुभव करे एवं यूनानिमस रिजोल्यूशन पास हुए ताकू सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट काहे की एंटायर यूएन रु बा मिलित जाति संघर सदस्य प्राइमरी मेंबरशिप मध्य बहिष्कार करिवार क्षमता यूनाइटेड नेशंस अछि। से सिचुएशन सेटा सिचुएशन आसी नै से बड़ी एबोडी किछि कार्य करि नै जा जोति पई ताकू बहिष्कार करा जाय परिबो। मे बी इंडिया सहित तार राइवलरिटी अछि, ठीक अछि, ता अर्थ नुहे समग्र विश्व पाई से विपद हेछि। विश्व पाई जतबे विपद हबो जे भली तुमरो द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध रे जर्मन समग्र विश्वर वर्ल्ड पीस पाई गोटे थ्रेट हेतला सेति पाई ताकू दी भाग विभक्त कर जायतला। जर्मन रो राजधानी जोटा बर्लिन अछि, बर्लिन को बर्लिन शहर रे ईस्ट वेस्ट करी गोटे विराट बड़ो वाल तयारी करा जायतला। बर्लिन शहर को दी भाग करा जायतला जा को जाय द ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन। तार उद्देश्य थिला जर्मन यूनाइटेड जर्मनी वर्ल्ड पीस पाई गोटे थ्रेट। तेणु ताकू जदी आमे दी भाग कर दो, भाग भाग कर दो, डिवाइड कर दो ताहले समग्र विश्व पाई ता केबेले सेही उद्देश्य रे ताकू विभाजित करा आइतला। तार लक्ष्य थिला होची से किंतु चाइना एभली किछि कार्य करने जे उत्पाई कि वर्ल्ड पीस पाई से गोटे विपद अमेरिका सहित तार डिस्प्यूट थाई पारे, इंडिया सहित थाई पारे, ता अर्थ इट डज नॉट मीन दैट एंटायर वर्ल्ड पाई से गोटे विपद। वर्ल्ड पाई तार यूटिलिटी नाही बा तार कोनोसी कंट्रीब्यूशन नाही एभली भाबा ठीक नै। एभली सिचुएशन हैज नॉट अराइज, दैट इज नॉट पर्टिनेंट टू से। सर जेमति कि गोटे हांगकांग सोवरेन थिला तारा गोटे सेपरेट थिला कॉन्स्टिट्यूशन। Hong Kong is a separate issue. Hong Kong was also a colony of England. Hong Kong was the sovereignty of Hong Kong was submitted to China as it was never to China with a treaty that Hong Kong will enjoy autonomous status under China. चाइना अधीन रे रहिबो। इंग्लैंड और गोटे कॉलोनी से थिला जेतेबेले चाइना दाबी कला हांगकांग मोर बोली मो पाखर गोटे राज्य जहा कि चाइना रो अंश विशेष ब्रिटिश इंग्लैंड ताको बलपूर्वक दखल करछि। तेणु विवाद को आगु को न नेकरी इंग्लैंड ताको चाइना को हस्तांतर कर देथिला एवं से जो हस्तांतर हेतला हेतै गोटे एग्रीमेंट हेतला। से एग्रीमेंट रो शर्त थिला हांगकांग चाइना अधीन रहिबो विथ ऑटोनोमस स्टेटस, निजुक निजे से स्वयं शासित होबो। सर्वनिम्न चाइनीज इंटरफेरेंस रहिबो। एबे अधिक चाइनीज इंटरफेरेंस होउची जोथि पई हांगकांग वासी संपूर्ण स्वाधीनता दाबी करछन। दैट इज डिफरेंट इशू, दैट इज डिफरेंट इशू। सर इफ जदी से ताइवान को कर दोछि निज अंडर रे ताल त कोन काढा जाय परिबो कि? चाइना इज नाउ asserting it has much more economic strength
today. In terms of America, it has much more military strength today in terms of in comparison to America. China America सहित वर्तमान प्रति America शक्ति बोली कहा जाउची एक तो शक्तिशाली राष्ट्र बोली बृहत पावर कहीं तार आर्थिक क्षमता तार सामरिक क्षमता तार जो टेक्नोलॉजी ज्ञान कौशल अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सुपरियरिटी तार जो कल्चर अच्छी से दृष्टि से गोटे हूँ अति शक्तिशाली राष्ट्र चाइना वर्तमान से स्तर को आसवाई चाइना सदा सर्वदा अहरह उद्यम कर रखी तेणु चाइना आसर्टिव अच्छी जमती कहीं प्रथम विश्वयुद्ध होता कहीं द्वितीय विश्वयुद्ध एसेंस टाक देख कॉज टाक प्राइमरी फंडामेंटल कॉज टाक देख एक्जिस्टिंग एम्पायर थिला इंग्लैंड ब्रिटिश एम्पायर एक्जिस्टिंग एम्पायर थिला फ्रांस रो साम्राज्यवाद थिला इंग्लैंड भी साम्राज्यवाद थिला नुआ करी साम्राज्यवादी राष्ट्र सब उभा हेले प्रथम विश्वयुद्ध पाई बाट कढ़ी नेला सेटा किए से उभा हेले जर्मन हला जापान हला इटाली हला ये तीनटा जाक नुआ करी शक्तिशाली हेकरी निजर साम्राज्य विस्तार करे चला आ तो जगह नाही सबु साम्राज्य को सबु राष्ट्र को से उपनिवेश कर सारी इंग्लैंड आ फ्रांस मिसिग्री तेणु एमाने चाहिए एक्सपांशन करने चाहिए प्रोटेक्शन करने साम्राज्यवाद विस्तार मूल कारण इंपेरियलिज्म कॉलोनियलिज्म हूँ मूल कारण जो कि साम्राज्यवादी राष्ट्र भितर प्रथम विश्वयुद्ध होता दो दुईटा पक्ष भितर द्वितीय विश्वयुद्ध से पक्ष भितर ठीक से साम्राज्यवाद विस्तार करने बर्तमान चीन बहुत व्यग्र किंतु संभव हो पार ना संभव हो पार गोटे विश्व व्यवस्था कार्य करुच्ची विश्व व्यवस्था कार्य नथिला से जो G7 रु G11 होची सेटा को जो हमर अछि सिक्युरिटी काउंसिल रो पावर को कमे दिया जाउची कि कारण चाइना को अलगा कर दिया गला अलगा सब तो पावरफुल से बड़ी कोनोसी जदियो दाबी अछि अन्य राष्ट्र गुडी को विशेष करी भारत को जापान को ब्राजील को जर्मन को साउथ अफ्रीका को कनाडा को ये बृहत शक्ति जो माने नुआ करी उभा हेलेनी शक्ति से मिलित जातिसंघ स्थायी सदस्य पद मिलवा उचित कारण से भली दक्षता क्षमता एवं प्रभाव से सृष्टि सारी अर्थ नुहे क्या काढ़ी देकर क्या रखा से पर्यंत कौन कंप्लीट रूपरेख कंप्लीट गोटे ये आसीनी पिक्चर आसीनी एपर्यंत कौन करा सब आलोचना पर्यालोचना सब चली बाह्य किंतु मिलित जातिसंघ जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी जनरल असेंबली रे ए प्रस्ताव संपर्क रे आदौ आलोचना करा जाई नहीं केवल प्रस्ताव ही आगत है रूपरेखा डेलिबरेशन हबो डिस्कशन हबो तापर वोटिंग हबो डिसीजन निया जीवो वी हैव टू वेट व्हाट शैल बी द कंप्लीट पिक्चर ओके सर थैंक यू एनीवे एनी मोर हेलो सर तो मिसाइल कोबाची जो कर दिले पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट पेरिस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट these are two terms in Soviet Union language. Its meaning is free society, open society. Communism रे essence होची heavy restriction. कौनसी सरकारी तथ्य कौनसी व्यक्तिर व्यक्तिगत मत बाहर को जाई परिबो नाही ओपन है परिबो नाही. That was called communism is otherwise known as iron curtain लोह परदा को भेद करी जे भली आलोक पास करि परिबो नाही. अनुरूप भाव रे सरकारी कटकणा रेस्ट्रिक्शन भली लोह परदा को भेद करी व्यक्तिगत मत सरकारी तथ्य बाहर को जाई परिबो नाही. किंतु मिखाइल गोर्बाचेव एभली एक वैप्लविक नेतृत्व थिले सोवियत यूनियन रो से सोवियत शासन को संपूर्ण भाव में मुक्त कले. फ्री सोसाइटी ओपन सोसाइटी जेउठी सरकारी तथ्य सरकारी मत
संपूर्ण भाव में समस्त पाखक जापर व्यक्तिगत स्वाधीनता व्यक्तिगत मत पोषण कर अधिकार संपूर्ण भाव में ओपन हो जहाँ कहला पेरिस्ट्रोइका ग्लास नस्ट पेरिस्ट्रोइका मीन्स ओपन अप गवर्नमेंट information to public glass nest means open up individual opinion to a free society open society जहाँ फल कि डिज इंटीग्रेट होगा 15 प्रजातंत्र को लेकिन सोवियत यूनियन गठन होता यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स 15 प्रजातंत्र को लेकिन ओपन होगा पर सब खंड विखंडित होगा सब स्वाधीन हो गले जदियो रुषिया तार थिला 3/4 अनडिवाइडेड यूएसएसआर रो 3/4 थिला रुषिया रो टेरिटरी एबे सेटा अछि किंतु अन्य राष्ट्र गुडी को स्वाधीन और अन्य प्रजातंत्र स्वाधीन हो गला पर रुषिया रो स्ट्रेंथ मिजरेबल फल कला आ प्रतिद्वंदिता स्तर रे रहिला ने अमेरिका सह जा फर कि शीतल युद्ध पर समाप्त हो गला दुईटा पक्ष समशक्तिशाली हेले सिना लड़िबे गोटे पक्ष एते दुर्बल हो गला आ युद्धर परिस्थिति काहे वर्ल्ड हो गला यूनिपोलर बाइपोलर थिला यूनिपोलर हो गला ओके एनी डाउट सर हेलो हाँ ठीक है सर मैं कहूँ हाँ सर okay sir one student has asked a question sir can China be removed from permanent seat in UN you Sir. can check from our chat box also sir I had already explained sir okay another question and dear learners if you have any question you can write in chat box or you can directly unmute your mic and ask and the people students are asking for a slides or PDF sir if you have prepared any slide can you please share so that I can distribute the slides to learners yes sir I can share sir okay okay dear students sir has told that he has prepared slides if he Okay. shares the slides to me no doubt I will be sharing with you sir समस्ती मु पठे देबी सारे पठला परे आज्ञा okay मु any पठे more question you have next is what other question no more question is there I think students if you have any question you can write or you can ask directly also please unmute and directly ask the question unmute करके आपण पचारि परबे किछि पचारि रहछि पिला माने हेलो yes ask पचारंतु पचार रश्मिता साहू किछि पचारे अछि कार की okay if you don't have any question then we will be closing the session so if you have any question if you have any doubt you can ask हेलो हाँ yes please carry on सर काली रो इनटा पठांतु आज्ञा काली सर कोन काली वीडियो पर पहले लिंक देछि ऊपरे चैट बॉक्स रे मु लिंक शेयर करछि काली वीडियो देख करो से लिंक रे
ସାର୍ ମୁଁ ପାଇନି ଫୋନ ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ଥରେ ପ୍ଲିଜ ଏବେ ରିସେଣ୍ଡ କଲେ। ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଦେଇଥିଲି ପାଇନ? ମୁଁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଅଫ୍ okay, I am sharing the link. Okay, again I ହଁ am ସାର୍ sharing ଆଉ the link. ଆଜ୍ଞା Again I am sharing the link. You can check this link for all the classes of RC Bhubaneswar. You may click the link for online counseling classes videos for all programs of RC Bhubaneswar. This link contains all counseling class videos of RC Bhubaneswar. You have to check what is your requirement. Accordingly, you can view that video. See the link. You can directly click on this link. Any more question? You are free to ask any doubt you have with. Dear learners, if you have any doubt, you can ask either in English or in Odia. It's not a problem. हेलो Be free. Yes. सर जो पीटीवीटी और एनपीटी माने सेटा कहा मध्य होइतिला जो ट्रिटीटा पीटीवीटी और एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी Non-proliferation treaty was signed among two parts. One is Soviet Russia, another is United States of America. Both were nucleus strength राष्ट्र दुईटा उभय निजर आर्सेनाल बा आणविक अस्त्र भंडार रे विपुल परिमाणर अनावश्यक आणविक दूरगामी क्षेपणास्त्र सब महजूद कर रखिथिले सेगुड़िकर कौनसी आवश्यकता नथिबारु उभय राष्ट्रर शीर्ष स्थानीय नेतृत्व मध्य जो शिखर सम्मेलन होता से निष्पत्ति निया जायथिला ये चुक्तिनामा स्वाक्षर करने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी आणविक अस्त्र प्रोलिफरेशन मीन्स एक्सपांशन न्यूक्लियस एक्सपांशन आणविक अस्त्रर प्रसारण नॉन प्रोलिफरेशन आउ प्रसारण हबो नाही जेते अस्त्र अनावश्यक भाव निर्माण करा जायछि ताकू पर्यायक्रमे नष्ट करि अमेरिका आउ रूसिया भितरे दुई दुई थर ये चुक्तिनामा स्वाक्षर Yes. Any more question? सर पीटीवीटीटा पीटीवीटी जो हेतला कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेनिफिट ट्रिटी comprehensive test CTBT सेगुड़ा सब UN अंडर रहितला सेवरल न्यूक्लियस स्टेट्स इन्वॉल्व थिले सेथिरे पार्टी थिले सेथिरे CTBT टा बायलैटरल नथिला मल्टीलैटरल ट्रीटी थिला जेमती एनपीटी टा केवल बायलैटरल ट्रीटी थिला दुई पाक्षिक चुक्तिनामा थिला किंतु CTBT टा थिला बहुपाक्षिक से चैप्टर को हम आसीना से यूनिट का आसीना अच्छी से यूनिट हमको पढ़िया पई आसिला हम भल भाव बुझा तेरे जदि पचार ये केवल जानी था सीटीबीटी हूँ बहुपाक्षिक एक चुक्ति बहु राष्ट्र से पार्टी थिले स्वाक्षरकारी थिले सेही राष्ट्र माने जेउ राष्ट्र माने निजकू आणविक क्षमता संपन्न बोली घोषणा कर सारिथिले एवं आंतर्जातिक स्तर रे रिकॉग्नाइज हे सारिथिले एमाने होचंती न्यूक्लियस पावर्ड स्टेट्स से माने अधिक प्रसारण अर्थात परीक्षण घरे जो आणविक परीक्षण हुए ताको करिवे नाही बा जो अंत महादेशीय कॉन्टिनेंटल जो ये अछि मिसाइल ताको भी आउ परीक्षण करिवे सेटा तो यूएन एजेज रे बा यूएन अधीन रे सेटा हेतिला से यूनिटी काम पढ़िबा अछि Okay. थैंक यू सर थैंक यू Any more question?
feel free to ask any question. It's not a problem. किसी असुविधा अच्छी पचारतु किसी असुविधा नहीं मन रखु सारे पाठ पढ़ला सब गोटे नोट पैड रखिथे पाखे जहाँ किसी डाउट लगिला पढ़ेला बेलू खाता लिखिकी रखु लास्ट जो आम 20 मिनिट्स रखुचु फॉर क्वेश्चन आंसरिंग से देखिए निजे पचारे सर हेलो सर एक्चुअली That is the procedure. Hello. हेलो सर व्हाट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच Post structuralist approach unit 5 रे जोटा post structurality approach rests on objectivity. Objectivity, what is the objective of a nation as an international actor? It rests on objectivity. लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन प्रत्येक राष्ट्रर जड़े आंतर्जातिक चरित्र देखा कार्यकलाप को उज्जीवित करने समस्त रखा तार ऑब्जेक्टिव टा कौन ऑब्जेक्टिव टा होची पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल नेशन as an international actor is known as post structuralist approach to the study of international relations. Understand? Sir. Hello. Yes, sir. Sir, what is post-colonial theory? Colonialism, post-colonialism. Colonialism बुझे जे अष्टादश शताब्दी जो शिल्प विप्लव है से colonialism आरंभ होता colonialism, imperialism, two sides of a same coin. साम्राज्यवाद, imperialism, गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट निजर शासन को विस्तार करे अर्थात अन्य स्वाधीन राष्ट्र को बलपूर्वक निज शासन अधीन को आनी सेठारे शासन करने व्यवस्था को आज साम्राज्यवाद जोटी साम्राज्यवाद शब्द अच्छी सेठी उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म शब्द अच्छी जे शासित है सी उपनिवेशवाद उपनिवेश होगा जे शासन कला जो राष्ट्र सी साम्राज्यवाद है साम्राज्यवादी राष्ट्र है तेणु साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद एटा आरंभ होता शिल्प विप्लव समय अष्टादश शताब्दी एंड है कौटी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार यूएनओ इतने फॉर्म होगा पृथ्वीर सबू स्वाधीन पराधीन राष्ट्र को स्वाधीनता करने दाबी सृष्टि है भारत समेत बहु राष्ट्र प्राय अनादिक सबू राष्ट्र स्वाधीन हो गले उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से परिसमाप्ति घटिला ट्रेडिशनल उपनिवेशवाद नुआ कर उपनिवेशवाद सृष्टि है नियो कॉलोनियलिज्म कोटा फाइनेंशियल इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म एमएनसी मल्टीनेशनल कॉलोनियलिज्म कल्चरल कॉलोनियलिज्म ये भी स्टार्ट है मिलिटरी कॉलोनियलिज्म जहाँ पाखे अधिक आर्थिक शक्ति अच्छी सामरिक शक्ति अच्छी सहायता कथार परिचालित हवाटा को है गोटे कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद ता कथार परिचालित है जदियो प्रैक्टिकली नहीं किंतु सबू चरित्र अच्छी सेठी उपनिवेशवाद स्वाधीन अच्छी फिजिकली किंतु प्रैक्टिकली पराधीन अच्छी नहीं किसी सामर्थ्य सामर्थ्य अधीन रही अधीन रहीटा हूँ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद आउ कि यहाँ कथा जिस्टा बुझेगा Sir, post-colonialism and sir, relation with hegemony. Hegemony means leadership. Leadership टा hegemony रो literate meaning होची leadership, elite class. Post colonialism रे जो राजनैतिक नेतृत्व रहिले पॉलिटिकल हेजेमनी रहिले से माने निज राष्ट्र को परिचालना करिया पई अन्य राष्ट्र निकट रे निज को से भली स्तर रे उपस्थापन करि पारिले नाही कारण सामर्थ्य नाही निजर रिस्ट्रक्चर आवश्यक अछि पुनर्निर्माण आवश्यकता अछि विकास आवश्यकता अछि विकास पय तो आवश्यक होची पूंजी कैपिटल विकास पय आवश्यकता होची टेक्नोलॉजी ए दिटा तो सुपर पावर पाखरे अछि ए दिटा होची जो माने धनिक राष्ट्र डेवलप्ड स्टेट्स तांका पाखरे अछि तांका कथार हां होयो पॉलिटिकल हेजेमनीटा रहला
सेई लीडर मान पाखरे जो इंपीरियल जो साम्राज्यवादी राष्ट्र पाखरे इंटरनेशनल हेजमनी थिला सेई साम्राज्यवादी राष्ट्र मान पाखरे इंटरनेशनल हेजमनी राजनीतिक नेतृत्वटा सेठी रहिला एमान पाखु आसिला जदि स्वाधीन हेले किंतु आंख पाखु हेजमनी आसिलानी बुझियला Again, sir. it means that Thank you, sir. colonialism is still persisting today that is neo colonialism नुआ रूप रे another any more question पिला माने सिना पचारिबा कथा क्वेश्चन साइलेंट रहियो नहीं नहीं तुमको चांस दिया जाउची क्वेश्चन पचारो किछि सब बेले खाता टाको पाखे रखथियो खाता कलम क्लास पढ़ेला बेले जहाँ किसी डाउट रोजी ताको नोट करके रखो जदि डाउट लास्ट मोमेंट में तो दो टाइम ना ताको तो पचारि परिबो दैट यू शुड डू so from next day onwards you follow this procedure keep a notepad and pen with you write down all your doubts and important points and you can discuss in the last moment okay if you have any question please ask otherwise you will be closing down Hello, sir. yes please. Sir, interrogating and the nation states are what? interrogating And the nation state. nation state means the states are now emerged as nations each state is a nation now each nation is a state now state is not alone termed as state it is termed as nation state because rise of nationalism there is upsurge in national feeling of each and every citizen of a state commonly as a whole is known as a nation so that nation state is now the new identity of each state nation state each state is a nation each nation is a state as because there is great national feeling so that they could be free till there is national feeling is present and active in the entire population of a state the state cannot be subjugated india was freed india was subjugated भारत को पराधीन कराइतला भारत को स्वाधीन भी भारतीय माने स्वाधीनता हासिल कले दीटा भीतर पार्थक्य होची देयर वाज नो नेशनलिज्म देयर वाज अपसर्ज इन नेशनलिज्म जातीयतावाद जेतेबेले सृष्टि हो गोटे राष्ट्र जनसाधारण के भितरे सेतेबेले से राष्ट्र गोटे जाति रे परिणत होइयो आमे होचु इंडिया इज फॉर इंडियंस जहा कहले बाल गंगाधर तिलक ये होचु गोटे जातीयतावाद सृष्टि रो गोटे उद्गीरण जहाद्वारा कि समग्र भारतीय मान हृदय रे सृष्टि हला आमे होचु भारतीय भारत होची भारतीय मान एमाने होचंदी विदेशी बड़पूर्वक हम शासक ये जो इंट्रोगेशन सेल्फ इंट्रोगेशन आत्म परिचय जोटा कहा जाए आ जो पचार जो व्हाट इज गल्फ वार चैट बॉक्स रे पचार कि अंबिका प्रिया सिंह व्हाट इज गल्फ वार व्हाट इज गल्फ वार सर Do you listen me, sir? Am I audible? क्यूट लगे रही को सर की वीडियो वीडियो लगन ना हेलो
Hello. Hello. Yes, sir. Sir. Okay. Call for. It's over now, I think. Student has no question. Anyone, if you have any question, otherwise you will close it. I think no more question is there. Okay, sir. Thank you Sir. very much for your nice clarification and nice presentation. Sir. Actually, you have the courage to face the issues and problems. So I am thankful to you, Anadi sir, Thank you, sir. for the presentation and nice presentation. And thank you all dear learners for your nice presence and patiently hearing. Thank you all. Okay, bye. Thank you, sir. Bye.